Yeah. Recording in progress. So I'll start. So what has happened कि with NIPT sensitivity भी बढ़ गई है, especially Down syndrome के लिए, but specificity बहुत ज्यादा बढ़ गई है and just 0.1% का margin रहा है. So here what we have done is false positive rates जो है वो सिर्फ 1 to 0.1% रेट रह गए, यानी कि वो प्रेगनेंसी जिनको हम फॉल्सली एन्यूप्लॉइडी लेबल कर रहे थे वो बहुत कम हो गई है, विच अब मैं याद दिलाऊंगी वापस कि वो 5% था विद कन्वेंशनल स्क्रीनिंग. सो दिस हैज इम्प्रूव्ड आर स्क्रीनिंग फैसिलिटेशन as far as sensitivity and specificity is concerned. So obviously this has become a good screening test. So recommendation क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? So recommendation are women who will be more than 35 years at the time of delivery, उनको आप डायरेक्टली NIPT ऑफर कर सकते हैं. ऑफर कर सकते हैं. सी ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग के लिए आपको पीछे पड़ जाना है. ACOG कहता है हर वुमेन को irrespective of her age you should offer her screening and diagnostic testing. Now it's patient's prerogative whether she wants to accept or she wants to refuse. So you have to document that I discussed this particular option with the patient. She was ready for it. I gave her. She was not ready for it. It was her choice. अगर NIPT हम okay, I was coming to the point कि हाँ जहाँ हम NIPT directly कर सकते हैं. So first is a woman who will be having an age more than 35 years at the time of delivery. या फिर we have a positive first or second trimester screening result. We can use it as secondary screening method. Or we have some aneuploidy marker on sonogram, then we can offer a patient NIPS. There is history of aneuploidy in previous pregnancies. There we can give a direct option of NIPS to these patients. या फिर patient is a known carrier of balanced translocation between chromosome 21 and 30. उसको हम direct NIPS offer करते हैं. So these are the conditions where directly NIPT can be offered. Again, I'm not saying it should be offered. It can be offered to the patient. So it depends on the patient whether she accepts this or not. कभी कभी आपने NIPT भेजा लैब में तो रिजल्ट आ गया कि शी इज स्क्रीन नेगेटिव और फॉर दिस और लो रिस्क फॉर दिस. बट कभी कभी यू गेट अ टेस्ट विच इज नोन एज नो कॉल टेस्ट रिजल्ट. या हम कुछ नहीं बता सकते क्या है, तो इसको नेगेटिव नहीं मानना है. इसको क्या प्रॉब्लम है कि ये जो आपने सैंपल दिया था वो अनइंटरप्रिटेबल है ड्यू टू एनी रीजन. इट डज नॉट बाय एनी चांस मीन कि इट इज हैविंग अ लो रिस्क प्रेगनेंसी. बल्कि ऐसी प्रेगनेंसीज पे जहां पे पूरा टेस्ट करने के बाद भी वी आर नॉट एबल टू गिव एनी रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन, देयर द रिस्क ऑफ एन्यूप्लॉइडी इज हायर. सो यू शुड बी मोर अलर्ट इफ यू गेट नो कॉल टेस्ट रिजल्ट. अब हमने स्क्रीनिंग तो कर ली क्योंकि किसी ने बोला करने का, तो हमने करने का. उसके बाद क्या करना है? सो स्क्रीन पॉजिटिव रिजल्ट आया यानी कि हाई रिस्क आ गई, तो उसमें आपको 3 कैटेगरीज देंगे. हमेशा आप रिजल्ट्स में देखिएगा. मैंने अभी पिछले वाले रिजल्ट में भी बताया था कि इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट इट वाज गिवन कि शी इज लो रिस्क, कट ऑफ इज लो, तो शी इज लो रिस्क. तो अब हम ऐसे पेशेंट को वी कैन हैव 3 टाइप ऑफ रिजल्ट्स
First is we get a high risk result, we get an intermediate risk result, or we get a low risk result. तो हमने क्या करना है, हाई रिस्क को तो अपने पास बिल्कुल वो कर लेना है कि ये तो हाई रिस्क पे हैं, तो डायरेक्टली आप इनको या तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पे रेकमेंड कर दीजिए, विच वी डू, कि अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी आई है तो हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कर देंगे. So with this comes my next question. What are the diagnostic testings we do for ruling out chromosomal abnormalities? I'm waiting for 3 seconds. So we got one answer. So CVS, very right, and amniocentesis. Good. So CVS और amniocentesis आप लोगों को मालूम है दोनों ही इन्वेजिव टेस्टिंग है, यानी कि हमें प्रेगनेंसी के अंदर जाके या तो एमनियोटिक फ्लूइड निकालना है या प्लेसेंटा के थ्रू जाके कोरियोनिक विलस को निकालना है और उसकी सैंपलिंग करनी है. तो इसलिए हम इसको पहले से अवॉइड करते हैं और यूनिक केसेस में करते हैं जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ एनिप्लॉइडीज ज्यादा है. We can offer genetic counseling to these patients also. So once we get high risk result, offer them diagnostic testing, detailed ultrasound, and not to be used as the sole basis for making decision कि terminate करा लो. मान लीजिए आपके पास high risk patient निकल आया, बहुत उसका कट ऑफ नीचे है, 1:25 का भी है, बट इट शुड नेवर बी यूज्ड अलोन कि आप इसको टर्मिनेट करा लो क्योंकि आप हाई रिस्क पे हो. रिमेंबर, आपने अगर कन्वेंशनल स्क्रीनिंग की है तो 5% तो वैसे ही आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट है, तो क्या पता आप उस 5% वाली प्रेगनेंसी को देख रहे हो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव देम अ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का ऑफर कि अब आप डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कराओ, उसके बाद ही बताएं. दूसरा है स्क्रीन नेगेटिव रिजल्ट. उनको ये काउंसिल करना है कि भाई लो रिस्क तो हो, but there is always a residual risk. Maybe we have missed 0.1% और आप उसी 0.1% में हो. तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि हमने स्क्रीन तो कर लिया. ये जो अभी आप इंटरनेट पे भी देखिएगा, बहुत बड़ा केस था ये जिसमें ऑब्स्टेट्रिशियन को बहुत परेशान किया गया कि हमने जो आपने टेस्ट बोले हमने कराए, फिर फिर भी हमारे बच्चे को डाउन्स कैसे हुआ, क्योंकि हम, और मे बी मैडम ने काउंसलिंग की होगी, बट ये हमें आज से अभी से समझना है कि वेन एवर वी आर ऑफरिंग दीज टेस्ट, हम ये कह के ऑफर करें कि ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है. और स्क्रीन लो रिस्क होने का मतलब लो रिस्क है, यानी कि रिस्क तो है लेकिन लो है, बट रिस्क है तो वो रिस्क मिटिगेशन के, हाँ नेगेटिव है 100%, देर इज नथिंग लाइक 100% फॉर स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग इज ऑल्सो ऑलवेज गिविंग अ estimation of some risk. It may be low, intermediate or high. तो उनको फिर भी आपको फॉलो अप में रखना है और डिटेल्ड एनामली स्कैन भी कराना है. उसमें भी मिस हो सकता है. सी द रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट, दे ऑलवेज राइट कोरिलेट क्लिनिकली, तो आपको जैसे कोरिलेट करना है कर दीजिए, बट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. Now, what ACOG Practice Bulletin number 226, which was a recent document issued in November 2020, I guess. Yeah. Screening should be offered to all, irrespective of age or background risk. Information about all screening and diagnostic tests should be provided, and we should provide a balanced information. तो अगर आपसे कोई स्क्रीनिंग के बारे में पूछता है, आप उसको कंबाइंड स्क्रीनिंग प्लस एनआईपीटी दोनों का बताएंगे, और उसके बाद ये भी बताएंगे कि अगर बाई चांस ये हाई रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क आता है तो आपका प्लान क्या रहेगा. और बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हाई रिस्क में हाई है ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा, you will be this, your baby will be like that. No, balanced information. So our aim is not to scare any kind of patient population. Information regarding serum analytes and NIPS, both in terms of availability of results versus cost, should also be given, and the benefits and what are the advantages. So my question is, one, if NIPT is done and the pregnancy has come low risk, should we still do NB, NT or not? Write your answers. Yes, because we still will be seeing, we remember NT was an independent risk factor marker for congenital cardiac anomalies. So, okay. Second question is, if NT is elevated, NIPT should be offered routinely, true or false? Routinely, कि अब NT बढ़ा हुआ है, चलो अब आप ये कराओ.
NIPT. सिर्फ NT elevated है. So we got few answers. Who false? So yes, true. Routinely कुछ नहीं offer करना है. Okay, the next question is only single serum analyte abnormal, जैसे अभी आपने केस में देखा था, तो अब उसमें NIPT should be offered or not? So routinely we should not offer. It is only after combined risk screening it should be offered as a screening test, secondary screening test or not. So what do you learn from today's presentation is पहला प्री स्क्रीन एंड पोस्ट स्क्रीन काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट इज योर प्लान इफ स्क्रीन पॉजिटिव is there, and what is your plan and counseling if there is low risk result. Patient has choice to opt for any kind of screening, so you cannot say कि नहीं मुझे तो NIPS पसंद है क्योंकि उसकी sensitivity और specificity बहुत ज्यादा वही कराओ. No, it's her choice. Monetary reasons cannot be cited for not offering test. You see a poor patient, बताओ तो उसके बारे में. और ऐसा भी अभी बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल नहीं हुआ है कि हम बिल्कुल ही इसको स्किप कर जाएं अपने काउंसलिंग सेशन से. सो यू कैन नॉट डिसाइड ऑन टू योर सेल्फ whether a patient can afford or not. NT alone can be used for USG based screening but not serum analytes. इसका मतलब क्या हुआ कि NT से काफी प्रेडिक्टेबिलिटी हो जाती है कि उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होंगी, कार्डियक एबनॉर्मेलिटी होंगी, बट सीरम एनालाइट से आप ये नहीं पता कर सकते कि इसमें क्रोमोसोमल कार्डियक एनॉर्मेलिटीज या कुछ भी होगा. So these are just markers which are used in combination with NT and maternal age. And finally, maternal age is the background risk, which we modify by using NT, by using beta HCG and PAPI, with gestational age specifications, race, body weight, etc. So nothing is very much 100%, nothing is very much 0%. There is something always low, intermediate, and high. And you yourself should remember that how to counsel this patient. So this was the basic lecture on chromosomal abnormalities and its screening. There is more to it, especially second trimester screening. The cases कि अगर ये आ गया तो कैसे करेंगे, बाद में आई पेशेंट तो कैसे स्क्रीनिंग करेंगे, and the counseling and the diagnostic testing, which we'll be learning in subsequent concept and focus lectures. So stay tuned for that. And we welcome the questions which you might be having. We have a group and you can post your queries later on. I'll post the link also if I was able to manage it in the group soon. So thank you for joining and let's meet soon. I do not know what to do next. How to stop recording? Okay, it's given here.